Which is again a very interesting session till they set up the stage. I'll just brief you about the session. So this part of the session resembles a courtroom debate where we are going to invite the accused and the defendant to defend their acts by providing all the essential facts and evidences before the court. A prosecutor to question the suspects and to lead the investigation. Judges to preside over the court proceedings and to ensure that the trial is done fairly and transparently, and to decide whether the accused person is guilty or innocent based on the evidences given, and then to give the final verdict. Welcome to our Adalat. So, it's really great to have this organizing committee discovering new methods of having debates. I think we should give them a big hand. The topic of this Adalat today is early or late initiation of dialysis, which is better. And the main person is Dr. Umesh Khanna. Please give him a big hand and welcome him. Dr. Umesh Khanna is a consultant nephrologist and founder, director of Kidney Associates Mumbai, founder and chairman of Mumbai Kidney Foundation, trustee of Corep Trust and Sapiens Health Foundation, past secretary of Mumbai Nephrology Group. He is a pioneer in setting up dialysis centers, and he was conferred the Dronacharya Award for Excellence in Teaching. Dr. Mukesh Shetye, you are the first to come on to the dais, and Dr. Mukesh Shetye will speak on the early initiation of dialysis, its advantage. Welcome Dr. Tukaram on to the... Let the prosecution begin. धन्यवाद मिलॉर्ड। जिंदगी में बहुत सारे कठिन काम किए हैं, लेकिन अपने ही ऑनरेबल कलीग्स को लाइफ में कभी प्रोसिक्यूट करने का मौका नहीं आया, और मुझे थोड़ा सावधानी बरतने के लिए एज अ प्रोसिक्यूटर मेरा फर्ज है कि आप तमाम सबूत और दलील को मद्देनजर रखकर ये फैसला करोगे, ना कि इन लोगों की जो ब्रांड इमेज है उसको सुन के। आपको कहना चाहूंगा कि डॉक्टर मुकेश शेटे नॉट ओनली इज एन एक्सेलेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, इज अ ग्रेट टीचर, बट वो एक ड्रामाबाज भी हैं, ड्रामा बहुत बढ़िया करते हैं। ही इज अ ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट, और आई एम श्योर वो इन ओपोनेंट की मिमिक्री करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सो कीप इन माइंड। डॉक्टर तुकाराम जमाले, मैं जानता हूं कि आप संत तुकाराम जी के भक्त हैं, और तुकाराम जी ने भी एक अपनी छवि जमा ली है जिसमें उन्हें तो गीता के ऊपर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। लोग यही समझेंगे मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चलो दोस्तों, जजेस ने ऑलरेडी कार्यवाही करने की तैयारी दे दी है, तो सबसे पहला सवाल हम डॉक्टर तुकाराम जी से पूछेंगे। डॉक्टर तुकाराम जी, आपके ऊपर इल्जाम है कि आप शुरू से ही लेट डायलिसिस के बारे में बातें करते हैं। जब पूरी दुनिया इलाइन ट्रायल सुन के एकेआई के लिए अर्ली डायलिसिस की बात करती थी, तब भी आपने तो ऐलान कर दिया कि डायलिसिस जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पे की जाएगी जब उसकी जरूरत होगी उसमें। तो क्या ये आज का जो डिस्कशन हो रहा है सीकेडी में, अर्ली डायलिसिस वर्सेस लेट डायलिसिस, और आप बोल रहे हो कि अर्ली डायलिसिस नहीं करनी चाहिए, उसके कोई सबूत हैं आपके पास? आप तो एक आइडियल नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो ये आइडियल ट्रायल के बारे में कुछ बताओगे क्या है ये?
पहले तो मुझे ये इल्जाम बिल्कुल मंजूर नहीं है कि हम लेट ये करते हैं. हम जस्ट इन टाइम की बात करते हैं ऑलवेज. AKI में भी हमने वही किया और आज भी वही करेंगे. तो जस्ट इन टाइम इज समथिंग दैट आई विल डिफेंड. तो जैसे अब आपने बताया आइडियल ट्रायल के बारे में, उसके पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस ग्रे हेड एंड सो कॉल्ड KOLs have advocated earlier and all of them have to shut up after publication of ideal trial because over 600 patients, multiple countries, and there was no benefit. So I don't think there is any scientific rationale whatsoever today to justify an earlier initiation of dialysis. I can only call it an unscientific and inhuman procedure. आइडियल के अलावा और कोई ऑब्जर्वेशन ट्रायल्स आपके पहले की हैं क्या? बहुत सारा ऑब्जर्वेशनल डेटा है, बट मैं ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जो अपोनेंट है वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे. मैं बात करूंगा ऐसे मेजरमेंट्स की जो एक्यूरेट है. ठीक है, उसके ऊपर हम आएंगे आपके पास. पहले मुकेश जी, आपके पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया इन्होंने. ये जो आइडियल के बारे में बात करें, आपको लगता है ये एक आइडियल ट्रायल है या इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं? क्या फ्लॉज हो सकते हैं? आइडियल के पहले तो मैं इस शब्द से शुरुआत करता हूं, अर्ली इन लाइफ, अर्ली इंसेंटिव, अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर. अर्ली प्लेज अ मेजर रोल इन लाइफ. लेट शशि कपूर, लेट ऋषि कपूर, लेट शम्मी कपूर. So इसी से पता चल रहा है कि when you are early, you are at least defensive. See, ideal trial is certainly not ideal. What they did, they encountered 855 patients, grouped into two. They started with 12 ml GFR, and then they wanted to come down to 6 ml GFR, saying that 12 ml did worse and 6 ml did better. While doing that test, 20% from 12 ml had to start dialysis at 9 ml. So they were in fact waiting. But 76% who wanted to incorporate in 6 ml had to start even earlier than that. That means they started at 9 ml. Ultimately, this criteria was revised from 12 ml to 9.8 ml because only that much cohort could satisfy the criteria. Difference of 2.2 ml. And now they say that the mortality in lesser, 6 ml GFR is better. Now, if you see all the biases, there are multiple biases which have been labeled in ideal. There is something called as the lead time the bias. What is lead time bias? Lead time bias is the bias where they have only incorporated one criteria, that I see some patients at 6 ml mortality, and then you see some patients at 12 ml mortality. Lead time is a time where you should start counting the disease process, the defined time in the disease process, and not when the treatment is started. So that's the biggest bias which ideal has. So naturally ideal cannot be considered as ideal at all, and that's why observational data to baat hi chodo. Observational studies are almost 10 to 12. What they did, they just went into the Cochrane analysis and calculated RCTs and this and that. None of them were RCTs. In fact, they were only observational studies, and they say, oh, there is two group: early dialysis bad, late dialysis good. All observational studies have multiple biases, and that's how this has all been discounted in the study which was done 2015 later. All this data which has been actually incorporated is from 2005 to 2015. The scenario has certainly changed from 2015 to 2022, which of course we'll call later. डॉक्टर तुकाराम जी, आपने आइडियल ट्रायल के बारे में बात की, कुछ और ऑब्जर्वेशन ट्रायल्स आपने कही थी कि जिसके बारे में बहुत डिटेल में खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि वो 2001, 2002, 2009 उस जमाने की है. तो डॉक्टर तुकाराम जी, आप ये जो लेटेस्ट ट्रायल आया उसके बारे में आपने कुछ बात ही नहीं की, जो 2021 नवंबर में बीएमजी में पब्लिश हुई है, जो काफी बड़े नामचीन लोगों की है. मैं जानता हूं उसके लीड ऑथर एडवर्ड फू हैं, और आप मोदी जी के हिसाब से चाइनीज लोगों के बारे में आजकल ज्यादा हम लोग बात नहीं करते, लेकिन यू हैवंट टॉक्ड अबाउट the BMG trial. See, that is the problem, sir. We go by the experience and eminence. Experience is just ability to commit same mistake with increasing confidence in observational studies. So, just now my able opponent showed how well he can act. But medicine is not a movie, sir. We are dealing with life and death of the patients, and we have to consider when each step we take whether it goes in the interest of the patient or not. जो स्टडी की आप बात कर रहे हैं वो मुझे
आपसे ही सुन के पता चली, लेकिन अभी मैं उसको रिकॉल कर रहा हूं। धीरे से बोलिएगा, ओपोनेंट को पता चल जाएगा कि अगर मैंने बताया। उस स्टडी के आप डीप में जाएंगे तो सर आप मेरे बाजू में आ जाएंगे। लोग खाली टाइटल की बात करते हैं, डिस्कशन और रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देते और इसी का फायदा उठाते हैं कुछ लोग और अपना मुद्दा आगे करते हैं। तो ये स्टडी का कंक्लूजन अगर मैं कोट करूं ऑथर की लैंग्वेज में, तो इट एक्चुअली सपोर्ट्स द फाइंडिंग्स ऑफ आइडियल ट्रायल एंड इट डजंट जस्टिफाई द कॉस्ट एंड मॉर्बिडिटी इन्वॉल्व्ड इन द डायलिसिस टू सर्वाइव टू एक्सटेंड द लाइफ बाय 1.5 month। 4 साल डायलिसिस करके 1.5 महीने का लाइफ देगा। आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। आई डोंट थिंक एनी नेफ्रोलॉजी कलीग ऑफ माई और पेशेंट विल बाय इफ आई एक्सप्लेन हिम द फैक्ट एंड नंबर्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। ये जो BMJ ट्रायल है जिसके बारे में डॉक्टर तुकाराम इज नॉट हैप्पी एट ऑल, उसमें कुछ दिया है कि कुछ 5% लोअर 5-year मॉर्टेलिटी होती है और 3.3% लोअर मेस होता है। तो आपको क्या लगता है ये सिग्निफिकेंट है? इसके बारे में यही आपके अगेंस्ट इल्जाम है कि इसको क्यों कोट कर रहे हो बार बार? ये मेरा मास्टर प्लान था ये स्टडी इंक्लूड करने का, because now at least I wanted to prove that what my opponent is saying, that early has a higher mortality and late has a lower mortality. At least this shows there is 5% better survival, and this 5% is great enough when you are talking about highest mortality in the late dialysis. So that at least confirms. Now equating mortality between the two studies, you come back to a basic facts. Now this is India. No? There are multiple guidelines which has been given by K. Doki, then K. Digo, about when to start dialysis, what is the initiation, and they say that you have to observe the people between 10 ml and 6 ml GFR. You have to have multidisciplinary approach. You have to be watchful for their ECV. You have to be watchful about how many diuretics and antihypertensives they are consuming for their blood pressure and so on. And then as soon as they cross that limit, you dialyze. This is India, bhai. People will report only when they are on the deathbed. Are you going to have multidisciplinary approach between 10 ml and 6 ml? By then, half the people will go by hyperkalemia, fluid overload, pulmonary edema and whatnot, or hypertensive crisis and stroke, and they'll be bedridden for lifetime. So, is there any safety between 10 ml and 6 ml? My contention is to start at a safer level and don't wait till you reach to the end. Like a patient comes with hyperkalemia, pulmonary edema, and what my opponent wants to say, keep your hand on the chest and say, all is well, all is well, don't dialyze, all is well. This wouldn't work. तो आपके हिसाब से GFR 15 या GFR 10 पे शुरू करनी चाहिए डायलिसिस? All the late were between 6 ml and lesser than that. All the early were 10 to 15 ml. I say you not start at 15 ml, but 10 ml is probably the right figure of that range where most of the uremic symptoms starts, malnutrition starts, hypertensive crisis starts, pulmonary edema starts. There's a very good study about ECF. The ECF study shows that in the trajectory. हम लोग उसके ऊपर आएंगे, पर जो मुझे समझ में नहीं आया, आपने कहा कि 10 ml के आसपास शुरू करें। ये GFR के ऊपर आप इतना बेट्स लगा रहे हो, GFR itself is फर्जी। करेक्ट। और ये जो आपने ये कोट दिया है, आपको लगता है कि वन साइज फिट्स ऑल इज द वे टू ट्रीट? ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर कि आप GFR के ऊपर जा रहे हैं। That's why GFR is not our criteria. Early, whenever you point out early symptoms, do not wait for them to become a mountain and start early. GFR is of course a deceptive criteria because muscle mass. I know the CKD patient, when they are frail, the muscle mass naturally would be less and the GFR would be overestimated. All that death rate which was shown in ideal as the low was in fact a wrong figure because of overestimation of GFR. No, they already started late. ठीक, हम आएंगे आपके पास फिर से दोबारा। डॉक्टर तुकाराम, आप बोल रहे हो कि डायलिसिस की जल्दी नहीं करनी चाहिए, रुकना चाहिए, लेट करना चाहिए, लेकिन वो पेशेंट जो पहले अच्छा खाता पीता था, जो ये नेफ्रोलॉजी के IPL में पार्टिसिपेट करता था, ही वॉज एबल टू रन। डॉक्टर मुकेश शेट्टी के पेशेंट्स तो इवन मैराथन में भाग लेते हैं। तो आप अगर लेट करते हो तो न्यूट्रिशनली वो पेशेंट इतना कमजोर हो जाता है। सो डोंट यू थिंक डीलेइंग डायलिसिस विल हैव दिस रिपरकशंस एंड इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन मैं एक बता दूं, मेरे कलीग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं वेट एंड वॉच की बात कर रहा हूं, वो वेट एंड स्लीप की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट एंड स्लीप। तो वेट एंड वॉच विल ब्रिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू डेयर टू केयर। यू आर अ नेफ्रोलॉजिस्ट,
patient is following up with you, you are not going to become let him become malnourished, you are not going to let him become hyperkalemic, and you are not going to let him become uremic. So I am talking about timely initiation, not earlier. In fact, it is not only useless, it is harmful, my lord. It is not just dialysis is most nephrotoxic medicine. Half of the patient will lose their residual function if they are initiated at 15 and 10. 5 years down the line, none of the patient will have any urine output, and 1 ml by kidney is 1000 ml by dialysis. So that one has to remember. So you should not advocate nephrotoxic medicine, at least, my lord. पर डॉक्टर तुकाराम जी, उनकी गोलियों का जो डब्बा आता है वो खाने के थाली से ज्यादा गोलियां डाल के वो खा रहे होते हैं, क्योंकि उनको डायलिसिस डिले करना है. ये पिल बर्डन, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, not necessary sir. See, if you practice evidence based medicine, you will not be counting more than 3 or 4 medicines on the book. थैंक यू. डॉक्टर मुकेश शेटे, मैंने अभी देखा आप टॉयलेट जाके अच्छे से रिलीव होके आए, तो आपको कितना आनंद लगा. तो वो जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके पेशेंट का रेसिडुअल रीनल फंक्शन चला जाता है और वो बेचारे नहीं कर पाते हैं, उसका क्या है आपको? So naturally, if you have a setup where technician doesn't know how to dialyze, they create intractable hypotension on dialysis and fire the renal function, the residual renal function will go away. Okay? This naturally could even happen after conservative treatment if you are over dehydrating the individual with diuretics. The question is, you can certainly avoid dropping residual renal function even on hemodialysis or even on any dialysis therapy. Most of the patients who have started early are PD patients, and we all know that peritoneal dialysis doesn't drop your residual renal function. In fact, it's supposed to your residual renal function. Now there are papers by Levan where he shows that even on hemodialysis you can keep residual renal function intact. One, by changing the modality of dialysis, hemodiafiltration, high flux dialysis, HD with HP, hemodialysis with hemoperfusion, all try to maintain residual renal function at par. Yet, your risk of all other uremic complications, life-threatening hyperkalemia and fluid load is avoided. So, where is the loss of residual renal function as per the new modern technique? डॉक्टर तुकाराम जी, आपके पास अगले 2 मिनट बचे हुए हैं, जिसमें आप अपने मुद्दे के बारे में लास्ट फ्यू कमेंट्स दे सकते हैं. सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी मेरे कलीग ने जो बताया कि पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं. दूसरा टॉक्सिसिटी जो रहता है डायलिसिस का, वो पॉकेट को रहता है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी. So even for the state like Kerala, which is considered as one of the most developed and economically better ones, they have reported a catastrophic health expenditure and the debt rates exceeding 70% in patients who are getting dialysis in government schemes. So forget about those who go to Dr. Shete. What is must be happening to their pockets, and they must be left in their generations into debts. So this toxicity also should be taken into considered, my lord, for this important decision to be made. थैंक यू. मुकेश शेटे जी, ऐसा लग रहा है कि जजेस अपना फैसला तेजी से सुनाने वाले हैं. ये ब्रिटिश राज में 30 साल में फैसले सुनाने वाली अदालत नहीं है. यहाँ 30 मिनट में फैसला सुनाया जाएगा. आपके पास कुल 2 मिनट बचे हैं अपनी सफाई के लिए. आपको क्या लगता है, आप क्यों जल्दी डायलिसिस के लिए? ये एक ही चीज पे मैं बात करूंगा, ECF जो मैंने बात की. Extracellular fluid volume starts accumulating as the GFR drops below 50 ml. It is around 135 ml per year, and when it is 1 liter per square meter surface area higher in the body, there is an increased risk of morbidity, mortality, cardiovascular events. They already stated that before end-stage kidney disease, 11% people die. तो अर्ली और लेट की तो बात ही नहीं, उनके तो ऑलरेडी फोटो लग चुके हैं एंड दे आर गार्लैंडेड. सो इफ दैट इज सो, वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग अबाउट मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड स्टार्टिंग डायलिसिस. दैट्स रिलेटेड टू ECF. Secondly, if you are so worried about late, why do you start preemptive transplant at 20 ml GFR? That means you are somewhere worried that between 20 ml and 5 ml patient will deteriorate. What about pediatric dialysis? The same study, which has stated that 6 ml is the ideal GFR, that is Canadian study. If you now cross-check with their pediatric protocol, they have started dialysis at around 15 ml for pediatric. Why? Because they are worried about overall growth. They are worried about their cognitive function. So, humans which are 40 plus are not important with cognitive function. Let them be mad. It's only for them. So, if these two say that you start early replacement therapy, why not early dialysis when you spot the early complications? I think Dr. Sachin Soni wants to give the fasla immediately. So, my lord, I rest my case. The ball is in your court.
when you have an excellent prosecutor, the work of the judges is reduced to a minimum. And I think both of them have put their points very, very favorably in their thing. And both have actually come to a mean that they will look at their patients very well and then take a decision whether to start or not to start. Then they will do a good maintenance therapy and start early if required and start late if required, as and when required. I think as judge, I believe that nobody is a winner or a loser. And both have done an excellent job. And I think both agree then more than they disagree. दोनों को शाबाशी और दोनों both have done well. Thank you. So, I think both the prosecutor as well as the opponents have decided that it is important to have a clinical exam repeatedly, call your patients, see them on time, and you dialyze the patient when it is necessary and just in time. I think that should be the take-home message. Thank you. congratulations, आपको वरित किया गया. Next case. Hello.